हेलो गाइस, सो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट द एज ऑफ वुड, प्लांट और एनी एनिमल, that is called carbon dating method. So in this method we will use one of the isotope of carbon that is radioactive, that is 14C. So it is used to find out the age of a wood or plant or an animal, and this method is called as carbon dating method. So see how will we find out the age of any wood or plant or animal. Okay, as we know that carbon has three isotopes, 12C, 13C, 14C, these isotopes, out of which the 14C isotope is a radioactive isotope, whereas 12C and 13C are not radioactive because it is unstable, whereas these two are stable isotopes. Okay, and why these are stable? Why 12C and 13C are stable? Because when we find out N by P ratio, N by P ratio, see 12C atomic number is 6, 13C atomic number is 6, and C14 atomic number 6. When we find out N by P ratio, that is neutron to proton ratio, then it will come 1 for this, and it will come 1.1 for 13C isotope and 1.3 for 14C6, 14 isotope, C isotope. Okay, then these two are stable, and when the value, and we know the rule that when the mass is less than equal to 20 and N by P value will be equal to 1, so it means that is stable, that the compound is stable. When the mass number is less than or equal to 20 and we found the N by P value is equal to 1 or equal to 1, then it means it is stable, whereas if it doesn't happen then it is unstable. So we can see that N by P value increases in 14C carbon, so it is unstable and it is radioactive isotope of carbon. Okay, clear? So let's go ahead. Now we will see that we have to see some of the key points. The ratio, yeah, what happened after plant is dead, 12C will remain same, whereas the 14C isotope will change as it is radioactive. When the plant, अगर कोई plant है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो क्या होता है, जो 12C है ना, 12C का कंटेंट सेम रहेगा, whereas जो 14C है वो चेंज हो जाएगा because it is radioactive. Okay, and the ratio of 14C or 12C will remain fixed. The ratio is always fixed. ठीक है, मान लो अगर हम कोई प्लांट है, कोई लिविंग प्लांट है, उसके अंदर हम 12C और 14C, अगर हम रेशियो निकालते हैं 14C आइसोटोप बाई 12C आइसोटोप की, ओके, उसके बाद मान लो वो कई साल बाद वो प्लांट है वो डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी किसी कारण से, अगर हम उसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे ना तो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी दोनों की. ओके, सो दिस कंसेप्ट इज यूज टू फाइंड आउट the age of any plant, animal or any wood. This is called carbon dating method. So we have to see how to we will find out. Now see, 14's amount will be decreased. Okay, we will see that it is a living sample, it is the ratio of a living sample. We have denoted C0 as for living sample, carbon living sample, for isotope 14, 14C note, and for 12, 12C note. Note is taken for living sample. Okay, and T is taken for sample at any time T, after death it is taken at T. It is for fresh sample, it is for dead sample. Okay, and one point here is that the ratio will decrease, the ratio will always decrease, means from living to dead the ratio will decrease. Ratio is fixed but it will decrease. Okay, that ratio will decrease with time. Now we know that formula for half-life or time, if you find out, if you want to find out the time, because it is a first order reaction, first order reaction, kt is equal to 2.303 log a naught by at, initial by at time t. Okay, for first order reaction, because all reactions which occur
in this phenomena of carbon dating are first order reactions. Then we replace it with disintegration constant we use in radioactive elements. Lambda is disintegrating constant T time, and we'll replace A naught initial will be 14 C naught because it is the concentration of fresh sample, and it will be the concentration of dead sample. Okay, so we'll replace A naught by 14 C naught and AT at will be 14 CT. Now we know the formula for half life will be lambda is equal to 0.693 by T half, or we can say T half is equal to 0.693 by lambda. This is the formula for T half. So we are using all these formulas to find out the age of wood or any other sample. Now the question is, see the question, the amount of carbon 14 in a piece of wood is found to be 1/6 of his fresh piece of wood. ओके अगर वो फ्रेश पीस ऑफ वुड दे रखा है, इसका मतलब है ये है सी नोट की वैल्यू. ओके, और ये किसकी अमाउंट दे रखी है, 14 सी की, मतलब 14 सी नोट की वैल्यू 14 सी मानेंगे फ्रेश पीस वाले को. द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन अ पीस ऑफ वुड इज फाउंड टू बी 1/6 ऑफ हिज फ्रेश वुड. तो जो बाद में मिली है वो इसी टी वो मिली है 1/6 किसकी, 1/6 फ्रेश वाले की, मतलब इसकी 1/6 वैल्यू मिली है. ओके, तो जो सी टी किसके इक्वल हो जाएगा, 14 सी टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी टी हो जाएगा 1/6 ऑफ 14 सी नोट. तो हम फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, सी नोट सी टी, और जो हमारा सी टी है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे पुट करा 14 सी टी को किसके इक्वल, 1/6 ऑफ 14 सी नोट. तो यहाँ पे पुट करा 14 सी टी की जगह पे ये 6 चला गया ऊपर. तो हमारा फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एज निकालनी है ओल्ड पीस ऑफ वुड. हाफ लाइफ दे रखी है 14 सी की. पहले अगर हाफ लाइफ दे रखी है तो हम उससे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. तो हमारी टाइम आ जाएगा कि कितना उसका टाइम है, कितना उसका टाइम लिया है डिग्रेशन होने में, फ्रेश पीस से डेड में जाने में. ओके, तो हमारा टाइम आ जाएगा. नाउ सी फॉर ए लिविंग सैंपल, if it is the initial ratio, if we want to find out the ratio of initial sample for 14 isotope and for mass 12, then if we are considering it is x, and for dead sample it is considered, we are considering at 14 ct upon 12 ct is equal to, we are considering this y. Okay, then dividing both of these, we know that the concentration of 12 ct will remain same even it is in fresh condition or the sample is in dead. So they will be cut out and we will get the ratio of 14 c naught upon 14 ct is equal to x by y. Now if we in any question we have given the ratio of the fresh sample of carbon 14 isotope to 12 isotope and carbon 14 isotope to 12 isotope and dead sample, then we can easily find out by just putting the value given values upon x upon considering x and y, as 12 c naught is 12 c naught and 12 ct does not change. टाइम के साथ जो 12 वाला आइसोटोप है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, ओनली जो 14 वाला आइसोटोप है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है. तो हम इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टी इज इक्वल टू 2.303 log x अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि ये कट आउट हो जाएंगे अपने एक दूसरे से, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अब देखो क्वेश्चन इसके बेस पे, ए बोन टेकन फ्रॉम ए गार्बेज बरीड अंडर हिल साइड हेड, इसकी कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो दे रखी है. ठीक है, द रेशो इन अ लिविंग सैंपल और एनिमल, ये 0.477 टाइम्स किसके, जो लिविंग सैंपल है उसके. ठीक है, लिविंग सैंपल की रेशियो है उसके. तो लिविंग सैंपल की रेशियो क्या मानते हैं हम, लिविंग सैंपल की रेशियो सी नोट अपॉन 14 सी नोट अपॉन 12 सी नोट. ठीक है, व्हाट वाज द डेट व्हेन एनिमल वाज बरीड, हमें बतानी है एनिमल बरीड हुआ
उस दिन उसका टाइम बताना। तो ये 14 सी नोट और 12 सी नोट ये हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है कि जब वो बरीड हो गया था उसकी रेशियो इसके इक्वल है, मतलब 14 सी टी अपॉन 12 सी टी किसके इक्वल है, 0.477 टाइम्स ऑफ सी नोट अपॉन 14 सी नोट अपॉन 12 सी नोट। तो हम फॉर्मूला इनपुट कर देंगे अपने में, लैम्डा टी इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स अपॉन वाई हो गया था, क्योंकि ये तो हमें रेशियो दे ही रखी है और हमने रेशियो 12 सी नोट से ये वाला कट हो जाएगा 12 सी, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम रहती है 12 सी की। तो फॉर्मूला इनपुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू दिस एंड वी विल गेट आंसर value of the t. Okay guys, so I think you can understand this. Please read this PDF thoroughly. Thank you, have a nice day.